एक बार स्वागत फिर से ध्यान के उपरांत जो हमने पिछली बार पढ़ा था उससे आगे मैं शेयर करता हूँ। इसमें हम 18th नंबर का वर्स पढ़ रहे हैं और बंटी जी ने जैसा मुझे बताया कि ये इसके बाद जो है वो रिपीटिशन ही है अप टू वर्स नंबर 20। तो एक बार हम क्विकली उसको जस्ट देख लेते हैं सो दैट इट गेट्स रिमाइंडेड इन अवर मेमोरी और फिर हम वर्स नंबर 21 पे चलेंगे। सो Basically, हम the same कंटिन्यू factors that apply to preceptors are repeated here in respect to teachers. That's the only difference. So duties are the same, hai? So yeah, go ahead, Nikhil. So I'm reading verse number 18, then quickly I will finish it 18, 19, and 20. Having meals and alms round, having gotten up at the appropriate time, the pupil should remove his sandals and arrange his upper robes over one shoulder. He should then give his teacher a tooth cleaner and water for rinsing the mouth, and he should prepare a seat for him. If there is a congi, he should rinse a vessel and bring the congi to his teacher. When he has drunk the congi, the pupil should give him water and receive the vessel. Holding it low, he should wash it carefully without scratching it and then put it away. When the teacher has gotten up, the pupil should put away the seat. If the place is dirty, he should sweep it. If the teacher wants to enter the village, the pupil should give him a sarong and receive the one he is wearing in return. He should give him a belt. He should put the upper ropes together, overlapping each other edge to edge, and then give them to him. He should rinse his teacher's bowl and give it to him while wet. If the teacher wants an attendant, the pupil should put on sarong evenly all around, covering the navel and the knees. He should put on a belt, putting the upper ropes together, overlapping each other edge to edge. He should put them on and fasten the toggle. He should rinse his bowl, bring it along, and be his teacher's attendant. He shouldn't walk too far behind his teacher or too close to him. He should receive the content of his bowl. He shouldn't interrupt the teacher when he is speaking, but if the teacher's speech is bordering on an offense, he should stop him. When returning, the pupil should go first to prepare a seat and to set out a footstool, a foot scraper, and water for washing the feet. He should go out to meet the teacher and receive his bowl and robe. He should give him a sarong and receive the one he is wearing in return. If the robe is damp, he should sun it for a short while, but shouldn't leave it in the heat. He should fold the rope, offsetting the edges by 7 centimeters so that the fold doesn't become bored. He should place the belt in the fold. If there is alms food and his teacher wants to eat, the people should give him water and then the alms food. He should ask the teacher if he wants water to drink. When the teacher has eaten, the people should give him water and receive his bowl, holding it low. He should wash it carefully without scratching it. He should then dry it and sun it for a short while, but shouldn't leave it in the heat, and so on. इसी तरह से bathing. If the teacher wants to bathe, the people should prepare a bath. If he wants a cold bath, he should prepare that. If he wants a hot bath, he should prepare that. If a teacher wants to take a sauna, the people should knead the bath powder, moisten the clay, take a sauna bench, and follow behind his teacher. After giving the teacher the sauna bench, receiving his robe and putting it aside, he should give him the bath powder and the clay, and similarly, so on. The dwelling. If the dwelling where the teacher is staying is dirty, people should clean it if he is able. When he is cleaning the dwelling, he should first take out the bowl and robe and put them aside. He should take out the sitting mat and the seat and put them aside. He should take out the mattress and the pillow and put them aside. Holding the bed low, he should carefully take it out without scratching it or knocking it against the door or the door frame, or he should put it aside, and so on. Spiritual support.
etc. If the teacher becomes discontent with the spiritual life, the people should send him away or have him sent away, or he should give him a teaching. If the teacher becomes anxious, the people should dispel it or have it dispelled, or he should give him a teaching. If the teacher has wrong view, the people should make him give it up, give it up, or have someone else do it, or he should give him a teaching. If the teacher has committed a heavy offense and deserves probation, the people should try to get the Sangha to give it to him. If the teacher has committed a heavy offense and deserves to be sent back to the beginning, the people should try to get the Sangha to do it. If the teacher has committed a heavy offense and deserves the trial period, the people should try to get the Sangha to give it to him, and so on. Then verse number 90, Ante Vasik Vatya Katha, discussion of proper conduct towards a पीपल। तो जैसा बंटी जी ने बोला कि ये सेम रिपीटिशन है ऊपर वाले वर्ड्स का, केवल रोल रिवर्सल हो जाता है। सो बंटी जी, शुड आई रीड इट और इतना इसके? मेरा तो सजेशन है आप बढ़ सकते हो आगे, यू कैन स्किप यस, स्ट्रेट लाइक आई हैड सजेस्टेड टू 21। या ये सारे वही रोल्स हैं जो पहले हम पढ़ चुके हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ उपाध्याय, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रीसेप्टर्स। यस, सो दिस ये 20 वाज पढ़ाम। ये भी सेम है, 21 पे यस, आप जा सकते हो, ये बिल्कुल सेम है ये भी। यस, 21 पढ़ेंगे। लास्ट टाइम भी इसको पढ़ा था क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया था ऊपर रिपीटिशन की वजह से। फिर से पढ़ते हैं। बाल अव्यक्त बथु। तो मैं इसको पाली में पढ़ता हूँ, और रविंदर जी आप इंग्लिश में पढ़ देंगे? ठीक है मैं पढ़। हाँ। तेनिकोपनिसमयेन दशवत्संहा दशवत्संहाति बाला अप्यता निस्सयं देन्ति दिस्सन्ति आचर्या बाला अन्ते वासिका पंडिता निखिल, सॉरी, दिस्सन्ति। एक मिनट, maybe there's a question with respect to what we just skipped. हाँ, There's no question. I was just asking if I can read it in English. okay, you want to volunteer for reading English? Yeah. Okay, Render ji, should be out. Is that okay? Fine. Yeah, thank you, Thank most you. welcome. Yeah. धेनिकोपनिसमयेन भिक्खु दशवत्संहाति बाला अव्यक्ता निस्सयं देन्ति दिस्सन्ति आचर्या बाला अन्ते वासिका पंडिता दिस्सन्ति आचर्या अव्यक्ता अन्ते वासिका व्यक्ता दिस्सन्ति आचर्या अपसुता अन्ते वासिका बहुसुता तिष्ठन्ति आचर्या दुप्पय्या अन्ते वासिका पय्यवन्तो ये ते भिक्खु अपिच्छाप्ये ते उज्झायन्ति खीयन्ति विपाचयन्ति कथं हि नाम भिक्खु दशवत्संहाति बाला अव्यक्ता निश्चयं दिस्सन्ति आचर्या बाला अन्ते वासिका पंडिता दिस्सन्ति आचर्या अव्यक्ता अन्ते वासिका व्यक्ता दिस्सन्ति आचर्या अपस्सुता अन्ते वासिका बहुसुता दिस्सन्ति आचर्या दुप्पय्या अन्ते वासिका पय्यवन्तोति अथ को ते भिक्खु भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं पे सच्चंकिर्भिक्खवे भिक्खु दशवत्संहाति बाला अव्यक्ता निस्सयं देन्ति पे सच्चं भगवाति विगर्हि बुद्धो भगवा पे विगर्हित्वा पे धम्मिं कथं कत्वा भिक्खु आमन्तेसि न भिक्खवे बालेन अव्यक्तेन निस्सयो दातव्यो यो ददेय आपत्ति दुःखटस्य अनुजानामि भिक्खवे व्यक्तेन भिक्खुना पटिबलेन दशवत्सेन वा अतिरेकदशवत्सेन वा निस्सयं दातुन्ति बाल अव्यक्तवत्तु निठितम्। The ignorant and incompetent. Then, once they had 10 years of seniority,
ignorant and incompetent monks gave formal support. As a result, there were ignorant teachers with knowledgeable pupils, incompetent teachers with competent pupils, uneducated teachers with learned pupils, and foolish teachers with wise pupils. The monks of few desires complained and criticized them. How can ignorant and incompetent monks give formal support just because they have 10 years of seniority? There are ignorant teachers with knowledgeable pupils, incompetent teachers with competent pupils, uneducated teachers with learned pupils, and foolish teachers with wise pupils. They told the Buddha what had happened. Is it true, monks, that this is happening? It's true, sir. The Buddha rebuked them. He then gave a teaching and addressed the monks. An ignorant and incompetent monk shouldn't give formal support. If he does, he commits an offense of wrong conduct. I allow competent and capable monks who have 10 or more years of seniority to give formal support. The section on the ignorant and incompetent is finished. अब आगे चल के वो डिफाइन किया जाएगा कि किस क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जो व्यक्ति सपोर्ट देने योग्य है. So incompetent and ignorance will be defined more clearly as we go forward. निश्चय पटिप सद्धि गाथा तेन कोपन समयेन भिक्खु आचर्य पच्छायेषु पक्कन्ते सुपि बिभ्रन्ते सुपि कालंकते सुपि पक्खसंकन्ते सुपि निश्चय पटिप सद्धियो न जानन्ति भगवतो भगवतो एतमर्थं आरोचेषुं पंक्तिमा भिक्खवे निश्चय पटिप्रसद्धियो उपज्झायो पक्कन्तो वा होति बिभ्रन्तो वा कालंकतो वा पक्खसंकन्तो वा याणन्त्येव पंचमी इमाको भिक्खवे पंच निश्चय पटिप्रसद्धियो उपज्झायम्हा क्षयिमा भिक्खवे निश्चय पटिप्रसद्धियो आचर्यो पक्कन्तो वा होति बिभ्रन्तो वा कालंकतो वा पक्क संकन्तो वा आणित्येव पंचमी उपज्झायेन वा समोधानगतो होति इमाको भिक्खवे छ निश्चय पटिप्रसद्धियो आचर्यम्हा निश्चय पटिप्रसद्धि कथा निठिता. Discussion of the ending of formal support. At that time, there were preceptors and teachers who went away, disrobed, died, or joined another group, but their pupils did not know about the ending of support. They told the Buddha. There are these 5 reasons why the formal support from a preceptor comes to an end. The preceptor goes away, the preceptor disrobes, the preceptor dies, the preceptor joins another group, or the preceptor orders it. There are these 6 reasons why the formal support from a teacher comes to an end. The teacher goes away, the teacher disrobes, the teacher dies, the teacher joins another group, the teacher orders it, or one is reunited with one's preceptor. Discussion of ending of formal support is finished. We are waiting for something. Okay, अब जो अगले 2 sections है ना, they have those qualifications कि कौन योग्य है, किस प्रकार की योग्यता है for support and for ordination. हालांकि अब इसमें दिक्कत यह है कि उसमें बहुत ज़्यादा repetition है और मैं actually उसको clean up करने बैठा था, but I haven't been able to do it. So one option is that we skip 23-24 this week and I'll clean it up and then we can come back and do it, and we just go ahead to 25.
I mean, alternatively, we could just read the whole thing. It'll be tedious, but really, it's up to you. ओके बंटी जी, जैसा आप कहें। वो हम 25 पढ़ते हैं। इसमें इसमें जो हमने पढ़ा उसमें उपध्याय के लिए 5 रीजंस हैं और आचार्य के लिए 6 रीजन है। तो लास्ट में लिखा है वन इज रीयूनाइटेड विद वंस प्रिसेप्टर। तो अगर वो आचार्य अपने प्रिसेप्टर को ही ज्वाइन कर लेता है तो फिर ऑब्वियसली डायरेक्ट प्रिसेप्टर ही फिर शिक्षा देगा, यही इसका मतलब हुआ। अगर वो स्टूडेंट अपने प्रिसेप्टर को ज्वाइन कर लेता है। हाँ, मतलब यहाँ पर उसको बोल दिया आचार्य और उपाध्याय, तो आचार्य नीचे है, उपाध्याय ऊपर है, राइट। हाँ, क्योंकि आचार्य क्रिएट किया गया था उस परिस्थिति में जब उपाध्याय किसी कारणवश नहीं है, मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं है। ओके आचार्य का कॉन्सेप्ट तभी क्रिएट किया गया था ना, हमने 1 या 2 हफ्ते पहले पढ़ा था ना कि आचार्य उनको क्रिएट करना पड़ा जब प्रीसेप्टर उपलब्ध नहीं था गाइडेंस के लिए। सो नेचुरली प्रीसेप्टर का ओहदा आचार्य से रिलेटिवली ऊपर है। ओके तो अगर वो व्यक्ति प्रीसेप्टर के पास वापस चला जाता है तो आचार्य की भूमिका एक तरह से समाप्त हो गई। That's the point with of reunited with preceptor. ओके तो ये मैंने अभी सीखा। उपध्याय को ही शायद बंटी जी यहाँ पे दरअसल बता पाए, उपाध्याय इन्हीं के लिए बोलते हैं ना हिंदी में, उपाध्याय। I've heard Dharsa mention it. I'm assuming it's the same thing, isn't it? Dharsa, it's equivalent, is it? I think so. I can check up in the dictionary what is the translation given in Hindi. क्योंकि जब हम सर वो शुभ संकल्प की गाथाएं पढ़ते हैं तो उसमें बोलते हैं मेरे आचार्य, मेरे उपाध्याय। Yeah, there's a of course difference in terms of role. It is different, but हिंदी में क्या कहते हैं वो मेरे ख्याल से तो देख के लिखा होगा, but I can recheck. आप पढ़िए तब तक आगे पढ़िए। जी जी जी। I think the question is, ये जो surname उपाध्याय है, is that coming out of this? Dharsa, I think that's the curiosity. Yeah, that has been in the ancient tradition. It was meant for the teacher. So उपाध्याय in Sanskrit alludes to a teacher, is it? आप बताइए ना उपाध्याय। जो पास में जाकर के अध्ययन करता है उनका मतलब पास में। हाँ Yeah. राइट आंटी। का मतलब हाँ, पास I में see. बैठ के जो अध्ययन करता है Yeah, so he's a उसको teacher. उपाध्याय कहते टीचर हो गया ना। हैं। हाँ, कहते हैं जैसे उसको मुझे सीनियर टीचर के रूप में देखते हैं शायद, एकदम नहीं मुझे याद पता है। यस, सो दैट इज व्हाट द न्यू थिंग आई एम लर्निंग कि आचार्य और उपाध्याय में, इसमें या उपाध्याय में उपाध्याय बड़े दिख रहे हैं और आचार्य उससे नीचे वाली पदवी है। ठीक है। Yeah. हिंदी डिक्शनरी से उपाध्याय उपाध्याय अध्यात्म शिक्षा देने वाला आचार्य, प्रिसेप्टर। तो धर साहब, ये इन द वैदिक ट्रेडिशन जो दीक्षा दी जाती है, दैट पर्सन has a particular nomenclature, is it, or one would club it into this upadhyaya business? How does it work? I don't know really. I don't know the specific details, but उपाध्याय का मतलब जैसे मैडम बता रही हैं कि जो पास बैठ के पढ़ता है जिससे, तो it is basically that ancient concept of a gurukul where students go and sit near a teacher and study with him. So he's called upadhyaya. And I think upadhyaya and acharya are used synonymously probably in the ancient Vedic tradition. तो जो हमने प्रीसेप्टर यहाँ क्रिएट किया है इंग्लिश वर्ड, या जो फॉर एग्जांपल व्हेन दे स्टार्टेड ऑर्डेनिंग, द फैक्ट दैट बुद्धा passes on the responsibility of ordination to others and then calls them upadhyayas, that's actually the same concept as this Sanskrit
upadhyaya. As well, Vedic concept, yeah. Okay. Thank you, sir. Thank you, Bhante ji. तो Bhante ji फिर हम 25th वर्ष को पढ़े. That's my suggestion, unless you Yeah. want to spend the next hour really plowing through No, we have no the idea, so material. Yeah. we will do as you say. Anya Tithya Ubkatha, verse number 25. तेनिकोपनिसमयेन योऽसो अयतिथ्यपुब्बो उपध्यायेन सैधम्मिकं मुच्यमानो उपध्यायस्य वादं आरोपयित्वा तय्येव तिथायतनं सङ्कमी सोऽपुनपश्चागन्त्वा भिक्खु उपसम्पदं याचि भिक्खु भगवतो एतमर्थं आरोचेषुं योऽसो भिक्खवे अयतिथ्यपुब्बो उपध्यायेन सैधम्मिकं मुच्यमानो उपध्यायस्य वादं आरोपयित्वा तय्येव तिथायतनं सङ्कन्तो सोऽआगतो न उपसम्पादेतव्यो योऽसो भिक्खवे अඤ्योऽपि अयतिथ्यपुब्बो इमस्मिन् धम्मविनये आकाङ्क्षति पब्बजं आकाङ्क्षति उपसम्पदं तस्य चत्वारो मासे परिवासो दातव्यो एवं च पन्भिक्खवे दातव्यो पठमं केशमस्सुं ओहारा पेत्वा काषायानि बद्धानि अच्छादा पेत्वा एकं सं उत्तरा सङ्गङ्कारा पेत्वा भिक्खूनं पादे वन्दापेत्वा उक्कुटिकं निषीदा पेत्वा अञ्जलिं पग्गणः पेत्वा एवं वदेहि इति वक्तव्यो बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामीति तेन भिक्खवे अयतिथ्य पुब्बेन संघं उपसङ्गमित्वा एकं सं उत्तरा सङ्गं करित्वा भिक्खूनं पादे वन्दित्वा उकुटिकं निषीदित्वा अञ्जलिं पग्गृहीत्वा एवमस्य वचनीयो अहं भन्ते अयतिथ्य पुब्बो इमस्मिन् धम्मविनये आकाङ्क्षामि उपसम्पदं सोऽहं भन्ते सङ्घं चत्वारो मासे परिवासं याचामि इति द्वितीयंपि याचितव्यो तृतीयंपि याचितव्यो व्यक्तेन भिक्खुना पटिबलेन संघो यापेतव्यो शृणातु मे भन्ते संघो अयं इत्थन्नामो अयतिथ्यपुब्बो इमस्मिन् धम्मविनये आकाङ्क्षति उपसम्पदं सोऽसङ्गं चत्वारो मासे परिवासं याचति यदि संघस्य पत्रकल्लं संघो इत्थनामस्य अयतिथ्यपुब्बस्य चत्वारो मासे परिवासं ददेय एषा यत्ति शृणातु मे भन्ते संघो अय अयं इत्थनामो अयतिथ्यपुब्बो इमस्मिन् धम्मविनये आकाङ्क्षति उपसम्पदं सोऽसङ्गं चत्वारो मासे परिवासं याचति संघो इत्थनामस्य अयतिथ्यपुब्बस्य चत्वारो मासे परिवासं देति यस्सायस्मतो कमति इत्थनामस्य अयतिथ्यपुब्बस्य चत्वारो मासे परिवासस्य दानं सोऽतुनहस्य यस्य नखमति सोऽभासेय दिनो सङ्घेन इत्थनामस्य अयतिथ्यपुब्बस्य चत्वारो मासो परिवासो खमति सङ्घस्य तस्मातु हि एवमेतं धारयामि इति एवं को भिक्खवे अतिथ्यपुब्बो आराधको होति एवं अनाराधको कथं च भिक्खवे अथ अयतिथ्यपुब्बो अनाराधको होति
इसको पूरा पढ़ता हूँ मैं। यहाँ तक आप पढ़ दीजिए पहले सेक्शन। मैं Okay. 25. Um, okay. Discussion on those who have been monastics of another religion. Soon afterwards, that monk who had been a monastic of another religion and who had returned to that religious community after refuting his preceptor came back to the monks and asked for the full ordination. The monks told the Buddha, "Monks, when someone who has been a monastic of another religion refutes his preceptor after being legitimately corrected by him, and then returns to that religion, but then comes back from that religious community once more, he shouldn't be given the full ordination. Anyone who has been a monastic of another religion and who wants the going forth and the full ordination on this spiritual path should be given 4 months of probation. And it should be like this. First, he should shave off his hair and beard and put on the ochre robes. He should then arrange his upper robe over one shoulder, pay respect at the feet of the monks, squat on his heels, and raise his joint palms. He should then be told to say this: I go to the refuge, I go for refuge to the Buddha, I go for refuge to the teaching, I go for refuge to the Sangha. For the second time, I go for refuge to the Buddha. For the second time, I go for refuge to the teaching. For the second time, I go for refuge to the Sangha. For the third time, I go for refuge to the Buddha. For the third time, I go for refuge to the teaching. For the third time, I go for refuge to the Sangha. Then, after approaching the Sangha, he who had been a monastic of another religion should arrange his upper robe over one shoulder, pay respect at the feet of the monks, squat on his heels, and raise his joint palms. He should then say this: Venerables, I have been a monastic of another religion and I wish for the full ordination on this spiritual path. I ask the Sangha for 4 months of probation. And he should ask a second and a third time. A competent and capable monk should then inform the Sangha. Please, venerables, I ask the Sangha to listen. So and so, who has been a monastic of another religion, wants the full ordination on this spiritual path. He is asking the Sangha for 4 months of probation. If the Sangha is ready, it should give 4 months of probation to so and so, who has been a monastic of another religion. This is the motion. Please, venerables, I ask the Sangha to listen. So and so, who has been a monastic of another religion, wants the full ordination on the spiritual path. He is asking the Sangha for 4 months of probation. The Sangha gives 4 months of probation to so and so, who has been a monastic of another religion. Any monk who approves of giving 4 months of probation to so and so, who has been a monastic of another religion, should remain silent. Any monk who doesn't approve should speak up. The Sangha has given so and so, who has been a monastic of another religion, 4 months of probation. The Sangha approves and is therefore silent. I'll remember it thus. And this is how someone who has been a monastic of another religion fails his probation. इति भिक्खवे अनियतस्य पुब्बो अतिकालेन गामं पविशति अतिदिवा पटिक्कमति एवंपि भिक्खवे अनियतस्य पुब्बो अनाराधको होति पुनश्च परं भिक्खवे अयतिथ्य पुब्बो वेश्या गोचरो वा होति विधवा गोचरो वा होति तुल्यकुमारिका गोचरो वा होति पंडक गोचरो वा होति भिक्खु भिक्खुनी गोचरो वा होति एवं भिक्खवे अयतिथ्य पुब्बो अनाराधको होति पुनश्च परं भिक्खवे अयतिथ्य पुब्बो यानि तानि सब्रह्मचारिणं उच्चावचानि करणीयानि तत् न दखो होति न अनिलसो न तत्रुपायाय विमंसाय
समन्नागतो न अलङ्कातुं न अलं संविधातुम् एवंपि भिक्खवे अयतिथ्य पुब्बो अनराधको होति पुण्य च परं पुण्यचापरं भिक्खवे अय्यतिथ्य पुब्बो नातिपच्छन्दो होति उद्देशे परिपुच्छाय अधिशीले अधिचित्ते अधिपञ्याय एवंपि भिक्खवे अय्यतिथ्य पुब्बो अनराधको होति पुण्यचपरं भिक्खवे अय्यतिथ्य पुब्बो यस्य तित्थायतना संकन्तो होति तस्य सत्तुनो तस्य दिठ्ठिया तस्य खन्तिया तस्य रुचिया तस्य आदायस्य अवर्णे भञ्यमाने कुपितो होति अनत्यमनो अनभिरद्धो बुद्धस्य वा धम्मस्य वा सङ्घस्य वा अवर्णे भञ्यमाने अत्यमनो होति उदग्गो अभिरद्धो यस्य वा तन्त्रित्थायतना संकन्तो होति तस्य सत्तुनो तस्य दिठ्ठिया तस्य खन्तिया तस्य रुचिया तस्य आदायस्य वर्णे भञ्यमाने अत्तमनो होति उद्दग्गो अभिरद्धो बुद्धस्य वा धम्मस्य वा सङ्घस्य वा वर्णे भञ्यमाने कुपितो होति अरत्यमनो अनभिरद्धो यद् भिक्खवे सङ्घातनिकं अय्यतिथ्य पुब्बस्य आराधनीयस्मिन् एवं पिखो भिक्खवे अय्यतिथ्य पुब्बो अनाराधिको होति sorry Yeah, down. He enters the village too early and returns too late in the day. He regularly associates with sex workers, widows, single women, pandakas, and nuns. He is not skilled or diligent in the various duties of his fellow monastics and lacks the proper judgment to organize and perform them well. He doesn't have a keen desire for recitation, for questioning, for the higher morality, for the higher mind, or for the higher wisdom. He is displeased when anyone disparages the teacher, the views, the beliefs, the persuasion, or the opinions of the religious community he is left, but he is pleased when anyone disparages the Buddha, the teaching, or the Sangha. He is pleased when anyone praises the teacher, the views, the beliefs, the persuasion, or the opinions of the religious community he is left, but he is displeased when anyone praises the Buddha, the teaching, and the Sangha. This last one is the critical factor for someone who has been a monastic of another religion to fail his probation. निखिल मेरा सजेशन है पूरा सेक्शन खत्म करो फिर देन यू स्टॉप फॉर डिस्कशन बिकॉज नाउ द पॉइंट्स विल बी जो अगले बिंदु है ना वो उसके वो हैं पूरक हैं सो जी then it will make sense for us to stop. yes एवं अनाराधको को भिक्खे अय्यतिथ्य पुब्बो आगतो न उपसंपादे तब्बो कथं च भिक्खवे अय्यतिथ्य पुब्बो आराधको होति इद भिक्खवे अय्यतिथ्य पुब्बो नाति काले निगामं पविशति नाति दिवा पटिक्कमति एवंपि भिक्खवे अय्यतिथ्य पुब्बो आराधको होति पुनश्च परं भिक्खवे अय्यतिथ्य पुब्बो न वेश्या गोचरो होति न विधवा गोचरो होति न तुल्यकुमारिका गोचरो होति न पंडक गोचरो होति न भिक्खुनी गोचरो होति एवंपि भिक्खवे अय्यतिथ्य पुब्बो आराधको होति पुनश्च परं भिक्खवे अय्यतिथ्य पुब्बो यानि तानि स ब्रह्मचारिणं उच्चावचानि करणीयानि तत्थदखो होति अनलसो तत्रुपायाय विमंसाय समन्नागतो अलङ्कातुम् अलं संविधातुम् एवंपि भिक्खवे अय्यतिथ्य पुब्बो आराधको होति पुनश्च परं भिक्खवे अय्यतिथ्य पुब्बो तिब्बच्छन्दो होति उद्देशे परिपुच्छाय अधिशीले अधिचित्ते अधिपञ्याय एवंपि भिक्खवे अय्यतिथ्य पुब्बो आराधको होति
पुनश्च परं भिक्खवे अय्यतिथ्यपुब्बो यस्य तित्थायतना संकन्तो होति तस्य सत्तुनो तस्य दिठ्ठिया तस्य खन्तिया तस्य रुचिया तस्य आदायस्य अवण्ये भञ्यमाने अत्तमनो होति उद्दग्गो अविरद्धो बुद्धस्य वा धम्मस्य वा सङ्घस्य वा अवण्ये भञ्यमाने कुपितो होति अनत्तमनो अनभिरद्धो यस्य वापन्थित्यायतना संकन्तो होति तस्य सत्तुनो तस्य दिठिया तस्य खन्तिया तस्य रुचिया तस्य आदायस्य वह्ने भयमाने कुपितो होति अनත්තमनो अनभिरद्धो बुद्धस्य वा धम्मस्य वा सङ्घस्य वा वह्ने भयमाने अत्तमनो होति उदग्गो अभिरद्धो इदं भिक्खवे सङ्घातनिकं अय्यतिथ्यपुब्बस्य आराधनीयस्मि एवं पिखो भिक्खवे अय्यतिथ्यपुब्बो आराधको होति एवं आराधको को भिक्खवे अय्यतिथ्यपुब्बो आगतो उपसम्पादे तब्बो सचे भिक्खवे अय्यतिथ्यपुब्बो नग्गो आगच्छन्ति उपज्जायमूलिकं चीवरं परियेषितव्यं सचे सचे अच्छिन्नकेशो आगच्छन्ति सङ्घो अपलोकेतव्यो भण्डुकं माय ये ते भिक्खवे अग्गिका जटलिका ते आगता उपसम्पादे तब्बा ना ते सङ्परिभासो तातव्यो तं किस्य हेतु कम्मवादिनो एते भिक्खवे क्रियवादिनो सचे भिक्खवे जातीया साकियो अय्यतिथ्यपुब्बो आगच्छति सो आगतो उपसम्पादे तब्बो न तस्य परिवासो दातव्यो इमाहं भिक्खवे यातीनं आवेणिकं परिहारं दम्मीति अय्यतिथ्यपुब्ब कथा निठिता सप्तमो भाणवारो Down. I think you highlighted now. When he fails in this way, he shouldn't be given the full ordination. And this is how someone who has been a monastic of another religion passes his probation. He doesn't enter the village too early or return too late in the day. He doesn't regularly associate with sex workers, widows, single women, pandakas, or nuns. He is skilled and diligent in the various duties of his fellow monastics, and he has the proper judgment to organize and perform them well. He has a keen desire for recitation, for questioning, for the higher morality, for the higher mind, and for the higher wisdom. He is pleased when anyone disparages the teacher, the views, the beliefs, the persuasion, and the opinions, or the opinions of the religious community he's left. But he is displeased when anyone disparages the Buddha, the teaching, or the Sangha. He is displeased when anyone praises the teacher, the views, the beliefs, the persuasion, or the opinions of the religious community he's left. But he is pleased when anyone praises the Buddha, the teaching, or the Sangha. This last one is the critical factor for someone who has been a monastic of another religion to pass his probation. When he passes in this way, he should be given the full ordination. If someone who has been a monastic of another religion arrives naked, a robe should be sought through his preceptor. If he arrives with hair, he should get permission from the Sangha to shave. But any dreadlocked, fire-worshipping ascetic who comes to be ordained should be given the full ordination without probation. Why is that? Because they believe that deeds and actions have results. And if someone comes to be ordained who has been a monastic of another religion, but is a Sakyan by birth, he should be given full ordination without probation. I give this special privilege to my relatives. The discussion on those who have been monastics of another religion is finished. The 7th section for recitation is finished.
थिंक मे बी वी कैन पे अटेंशन टू द फैक्ट कि जो कर्म सिद्धांत है उसकी कितनी भूमिका होगी, ये इससे जाहिर होता है। और मैं एक वो सूत्र पढ़ रहा था जिसमें कि वो उसको मंडेन राइट व्यू बताते हैं। इट्स एक्चुअली सी द वे ही पुट्स इट देयर उस सूत्र में कि बात पे एक्चुअली शुरू करना ही हम गलत शुरू करते हैं अगर हमें कर्म के सिद्धांत की whatever understanding acceptance नहीं है तो so I think this really for me mainly underlines the importance of just that of the understanding of karma basically. एंड सो वी कैन सी कि जब अभी अभी भी आज के युग में भी जब ऐसे ट्रेडिशंस हो रहे हैं जिसमें कर्मा इज रिफ्यूटेड एंड अदर aspects of teaching are sought to be used pragmatically, and I mean the pragmatism part is okay, but in terms of the actual potential for liberation, you can see how in terms of how the Buddha puts it, it seems that वो उसका एक मूल शुरुआती सिद्धांत है ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द पाथ। सर सर आप इसमें लास्ट वाली लाइन का मतलब अनुवाद बताएंगे? यातीनम क्या होता है, आवेणिकम क्या होता है, परिहारम क्या होता है? याति तो रिश्तेदार हो गए ना। अच्छा, आवेणिकम, परिहारम। I don't know, परिहार। We'll have to check. I don't know immediately. ओके ओके सर, दम्मी थी तो देता हूँ बन जाएगा, आवेणिकम परिहारम। Maybe special privilege. नहीं, दैट्स व्हाट दे आर रिटन, बट आई वांट टू नो द ट्रांसलेशन, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन जो हिंदी में। ओके On तो that. I'll check up and let you know. यस सर, ओके सर, ओके सर। उस समय फिर भंते जी कौन से ऐसे जो मतलब ऐसा या आज के सिनेरियो में भी देखिए, क्योंकि इंडिया में तो बहुत प्रेवलेंट है ये बात कि कर्म सिद्धांत के आर देयर एनी ट्रेडिशन विच आर नॉट फॉलोइंग दिस कर्म सिद्धांत? पूनम और उस समय वो डिस्क्राइब करते हैं ना, वो जो 5 या 6 थे, या इनफैक्ट ब्रह्मजाल सूत्र में तो 62 डिस्क्राइब करते हैं ना, जो उस समय आध्यात्मिक सिद्धांत रहे थे। और उसमें कई सारे हों, अब मुझे बाय नेम आई डोंट रिमेम्बर कौन से हैं वो, लेकिन उसमें सर्टनली है ना बाय नेम जो ऐसा मानते हैं, फॉर एग्जांपल के जो प्योर मटेरियलिज्म है ना, कि सब कुछ यही है, इसी जन्म में सब खत्म हो जाता है तो मजे करो, दैट टाइप ऑफ थिंग। तो उस तरह के तो तभी भी रहे, सत्य में भी आते हैं, और अब तो खैर और भी हैं, ज्यादातर तो यही सिद्धांत है। तो आई थिंक दैट धारणा इज वेरी प्रेवलेंट नाउ, एंड इट सीम्स इस डिस्क्रिप्शन से कि तब भी प्रेवलेंट थी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ही सेइंग कि जो उस उन ट्रेडिशन से आ रहे हैं जो जिनको की कर्म की एक्सेप्टेंस है, उनको आप सीधे ऑर्डेन कर सकते हैं। यू कैन सी हाउ इम्पोर्टेंट ही इज मेकिंग दैट होल थिंग इन द स्पिरिचुअल पार्ट। या और दैट मीन्स ही मस्ट बी, आई मीन दे मस्ट बी बाय दे मस्ट बी सेक्ट ना। एक तो ये अंडरस्टैंडिंग होगी बिकॉज प्रायर नॉलेज होगी इस तरह की कि ये लोग ऐसा फॉलो करते हैं। हाँ पूनम, उसका तो काफी आता है ना, आई सेंड यू द सुत्तास दैट ही इज मेंशनिंग, Many 5 या 6 जो उनके साथ के थे। जैसे महावीर का तो आता ही है, फिर अजीत समथिंग और दी अदर। जीत कंबल कैसी का, कई सारे लोग थे उस समय, मक्खाल गोसाली। अच्छा, Interestingly, the movement started by Dr. Ambedkar also doesn't believe in it. Doesn't believe in इन व्हाट? karma. In Kamma principle, in the manner in which it is proclaimed by the Buddha. अच्छा, So it's not so uncommon.
because the modern so-called scientifically oriented people don't accept it because there's no proof, and they say this has been exploited in the past for discrimination among various castes. So Okay. it's one has to be very, just be aware of it, not that I make any comment on that. Yes, yes, sir. I mean, I have seen. Yeah. Okay. So, Bhanteji, is this also still practiced, this 4 months of probation? मतलब यार एक्चुअली usually. सक्षम पता है क्या हो गया है अब तो फ्रैंकली, जैसे मैं हमारा बता सकता हूँ है ना। अब एक चीज़ हमें याद रखनी ज़रूरी है, मैंने कई बार ये दोहराया है कि हम ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसको हम ऐसा नहीं समझें कि ये यूनिवर्सली आज की डेट में एग्जैक्टली इसी लेटर से सभी ट्रेडिशंस में प्रैक्टिस्ड हैं। लगभग जितने मंक्स हैं उतने ही विनय के इंटरप्रिटेशंस और स्पिन्स हैं। सो दैट ओवरऑल डिस्क्लेमर आई वुड ऑलवेज मेक। हमारे यहाँ पे तो इनफैक्ट इवन कंसिडर ये यहाँ इन्होंने शब्द रिलीजन यूज़ किया है ना, बट फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ एक मंक आए थे टिकनाथान की ट्रेडिशन से, सो यू नो ही वाज आल्सो सब्जेक्टेड टू द सेम पीरियड ऑफ प्रोबेशन। इनफैक्ट जो और थेरावाडन मोनेस्ट्रीज से आते हैं, दोज हु हैव known to use money for example, they would also go through the same process. तो at least in our case, and I think this started from Ajahn Chah, उन्होंने काफ़ी उसको कस दिया था। और अजान चाह का जहाँ तक मुझे याद है यही उसमें पॉइंट था कि दैट हेल्प्स अस मेक श्योर कि हमारा जो स्टैंडर्ड है विनय पालन का, रूल्स के पालन का, वो डाइल्यूट ना हो। So yeah, it's followed, and in our case it's made even tighter in terms of religion is considered any other tradition जिसकी विनय इंटरप्रिटेशन हमसे अलग है। That's how we are doing it right now. So this is for someone, आपने बताया जैसे जो एक कृष्णाथान के ट्रेडिशन से आए थे, बट इसमें सूत्र में लिखा हुआ है कि if someone goes to that religion, first disrobes and then comes back, so it's applicable. Same principle, you know, it's the same principle that is currently applied. कि अगर कोई आता है then and if he is already a monk, है ना, वो in some senses that person is already a monk ना, ये बात है। अच्छा, if he's already a monk. यही तो इसमें प्रिंसिपल है कि Okay. वो इस ऑर्डर को छोड़ के किसी और ऑर्डर में चला गया। Okay. He's not left monasticism per se. Okay. So, and that would be same for like in some sense I guess for Vajrayana and all. यार हम लोग उसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं ना, आई शुड ऑलवेज मेक दैट राइडर, क्योंकि याद रखो जब ये सब इवॉल्व हो रहा था तब तो वज्रयाना वगैरह तो कुछ था ही नहीं ना, थेरवाड़ा भी तो नहीं था, रिमेंबर थेरवाड़ इज आल्सो Perhaps Buddhism be yeah exactly maybe as a word नहीं था. yeah exactly. Okay. There is that sutta in which I think Mahaparinibbana Sutta, in which a monk comes for ordination to Buddha, and he's from other tradition, and Buddha tells him before ordination you'll have to go probation for 4 months, and he says I'm willing to go probation for 4 years, no problem. And then when he practices, accepts it, and Buddha then says, okay, give him full ordination, forget about probation. So there is so many, because he asks questions, and then on the basis of questions he feels that this person is good enough to be given ordination without probation. So there is obviously flexible at the time of Buddha. Now people have to create certain rules, which are rules specific to particular tradition. फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ तो ये भी अब प्रथा है ना कि जो बंदा आता है फॉर एग्जाम्पल ये कहता है कि भाई आई वांट टू ऑर्डेन, उसकी अपनी प्रोबेशन बहुत लंबी है ना, 6 महीने तो हम अनागारिक ही करते हैं मिनिमम, लाइक आई डिड इट फॉर 1 ईयर, और फिर नॉविस पीरियड हमारे यहाँ कम से कम 1 साल का है, वेस्टर्न मोनेस्ट्रीज में तो 2-2 साल के हैं। तो उसमें भी अब काफ़ी वो हो गया है, सो यू कांट स्ट्रेट अवे लाइक जिसमें इसमें हम प्रसंग देखते हैं ना, somebody walks up and says I want ordination, वो कहते हैं हाँ हाँ चलो, so like we've changed even that for example, so made it much more selective, much tighter.
So we can see, like Dharsab is saying, how rules will be adapted to suit current situation, current conditions. Incidentally, I've checked up. Avenik means special. Parihar means protection or a kind of privilege which is given. यस सर, यस सर। I'll come to you एसपी सर, आपने हैंड रेस किया हुआ है तो सर इस लाइन के बारे में मैं थोड़ी देर सोचा और सोच के मेरा जो अंडरस्टैंडिंग बनी है वो यही है कि भगवान बुद्ध की जो जातक कथाएं पढ़ते हैं उसमें जो भी उनके क्लोज पीपल है वो लगातार जन्म मृत्यु से गुजर रहे थे, तो शायद उनको पता होगा कि ये लोग तो अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो इनके पास इतनी पारमी है कि इनको इस तरह से प्रोबेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज व्हाट आई कुड टेल माय माइंड। Yeah, Otherwise, sounds sensible. Yeah. yeah. But sir, कैसे? I mean, this is, I think so. It's related to the line above that कि जो भी tradition को इस तरह के कर्म सिद्धांत को मानते हैं, they are part of my family, kind of thing. I mean, if you read just 2-3 lines above, it says so, and then it's because of the deed and the action have result. And if someone comes to be ordained who has been monastic of another religion but is a Sakyan by birth, he should be given full ordination without probation. I give this special privilege to my relatives. Okay, so then, okay. So Sakyan traditions से जो आ रहे हैं, इसकी बात हो रही है फिर, then this is third category. Yeah. और इसमें भी वो केवल रिलेटिव को ही बोल रहे हैं। आई मीन दैट्स व्हाट आई कुड थिंक, क्योंकि वो जो हमने डिसाइपल ऑफ बुद्धा पढ़ी थी उसमें जितनी जातक कथाएं है, कोई कभी कुछ बनता है, कोई कभी कुछ बनता है, and वो जन्मों जन्मों से दे आर कमिंग, सो मे बी। एसपी सर आपने हैंड रेस किया हुआ है, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा डाइग्रेसिव है। एक्चुअली बंते जी ने मेंशन किया था कि देयर आर सम ट्रेडिशंस व्हिच एक्सेप्ट मनी, और उनके लिए शायद कुछ रूल है जो भी है। The question I have is with respect to the forest tradition itself. It does accept donations for the Sangha, and probably it also stores things, provisions of various kinds, and distributes it perhaps to other monasteries, as once you explained. So, is there any inconsistency, or that's okay? सुरेन जी, ये एक्चुअली इसमें आएगा आगे चल के, या इसमें नहीं आया एक्चुअली, वो उसमें है जो सुत्त विभंग है ना, जो पटिमोक्ष की रूल्स हैं उसमें उसके बहुत डिटेल में इट्स ऑल लेड आउट। बट बेसिकली द बुद्धा डिड परमिट कि भाई अगर आपको मॉनेस्ट्री को जो जो संघ है उसको कुछ चीज़ें अक्रू होती हैं तो वो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, बट इट डजंट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर मंक, है ना। That's तो what जो पैसा वाला मामला है वो है कि क्या एक व्यक्ति पैसे हैंडल, पैसा वाला जो मामला है, इट पर्टेन्स टू अ पर्सन इंडिविजुअल मंक, not just not handling money but not dealing with money in respect to either himself or the or his fellow monastics. तो उसके लिए फिर उन्होंने फिर ये जो जो सक्षम वर्ड यूज करते हैं ना, कपिया कपिया, दैट थिंग वाज देन क्रिएटेड, जो एक ले पर्सन है जो उनके बिहाफ पे रिसीव कर सकता है पैसे, और डोनर की इच्छा अनुसार या मंक की नीड के अनुसार उसको खर्च करे। So that's So that actually is very part of clearly the laid out. system. Yeah. That's very Okay. clearly laid out. Yeah. That's exactly the role Saksham was playing for Ajahn Kevali जब वो यहाँ आए थे। जी, thank you. Thank you very much. तो बंदे जी मैं वर्स नंबर 26 पढ़ूं? अगर मैं पढ़ूंगा तो शायद हम 5 मिनट एक्सटेंड कर देंगे, क्योंकि मैं 5 मिनट पे पढ़ूंगा पर 5 मिनट में वो सक्षम शायद उसका वो करेगा। आपका म्यूट है बंदे जी। मैं कह रहा हूँ we can also close, maybe you can do some Okay. chanting or something, है ना। वो तो Okay. ये सेक्शन फिर डिजीज वाला फिर बढ़ता चला जाएगा आगे।
ऑलराइट, ठीक है बंटी जी। करणीय मित्र सूत्र का पाठ करेंगे। करणीयमा अथ कुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमीक्ष्य शको उजूच सुहुजूच सुवचो च अस्य मुदु अनतिमानि सन्तुष्को च सुभरो च अपकिच्चो च सल्लहुकबुद्धि सन्तीन्द्रियो च निपको च अपगब्भो कुलेषु अननुगिद्धो न च क्रुद्धं समाचरे किञ्चित् येन विඤ्युपरे उपवदेयुं सुखिनो वा खेमिनो हन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता ये केचित् पाणभूतस्थितसा वा थावरा वा अनवशेषा दीघा वा ये महन्ता वा मध्यमा रसिका अणुकृतूला दिट्ठा वा ये च अदिट्ठा ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे भूता वा सम्भवेशी वा सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता न परो परं निकुब्बेथ नातिमय्येथ कङ्कचिनं किञ्चि व्यारोसना फटिगसंज्ञा न अय्यं अय्यस्य दुःखं इच्छेय माता यथा नियं पुत्रं आयुषा एकपुत्रं अनुरक्षे एवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं ऊर्ध्वं अधो च तिर्यं च असंबाधं अवेरं असपत्तं तिष्ठं चिरं निस्सिन्नो वा शयानो वा यावतस्य विगतमिद्धो एतं सतिं अदिष्ठेय ब्रह्ममेतं विहारं इदम् आहुः दिट्ठं च अनुपगम्य शीलवादस्सनेन सम्पन्नो कामेषु विनेयगेधं न हि जातु गभ्यशय्यं पुनरेतीति। ऐसा करना चाहिए उसे जो अच्छाई में कुशल है और शांति का मार्ग भली प्रकार जानता है। वह सुयोग्य बने, सरल बने, सुभाषी बने, मृदु स्वभाव वाला और निरभिमानी बने। वह सदा संतुष्ट रहे, उसका पोषण सहज हो, अति व्यस्त ना हो, सादगी का जीवन हो, इंद्रियां शांत हो, दक्ष हो, विनीत हो, कुलों में आसक्त ना हो, कुछ भी ऐसा ना करे जिसे विज्ञजन बुरा कहे। सदैव यही भाव रहे, सुखी और क्षेम युक्त सभी प्राणी अंतर मन में सुखी हो। जो भी प्राणी या भूत है, स्थावर या जंगम, बिना किसी अपवाद के बड़ी या महान अथवा मध्यम या छोटी, सूक्ष्म अथवा स्थूल देहधारी, दृश्य हो या अदृश्य, दूर रहते हो या पास, उत्पन्न हो या उत्पन्न होने वाले हो, सभी प्राणी अंतर मन में सुखी हो। एक दूसरे को धोखा ना दे, ना किसी से घृणा करे, क्रोध या वैमनस्य से एक दूसरे के दुख की कामना ना करे। जैसे माता अपने इकलौते पुत्र की रक्षा हेतु अपनी जान जोखिम में डाल देती है, उसी प्रकार वह सभी प्राणियों के प्रति अपने मन में अपरिमित मैत्री भाव बढ़ाए, सभी लोगों के प्रति अपरिमित मैत्री भावना करे, ऊपर नीचे आड़े तिरछे, बिना किसी बाधा के, बिना वैर और शत्रुता के, चाहे खड़ा हो या चलता, बैठा या लेटा, जब तक तंद्रा विहीन है, इस स्मृति को बनाए रखे। इसे ही ब्रह्म विहार कहते हैं। इस प्रकार वह मिथ्या दृष्टि में नहीं पड़ता, शील व सम्यक दृष्टि से संपन्न हो जाता है।
कामनाओं के प्रति आसक्ति को हटाकर पुनः गर्भ में नहीं आता। Over to you, Bhante ji, for closing chants. अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तं अभिवादयामि। स्वाक्षातो भगवता धम्मो भगवन्तस्साम् सुपटिपन्नो भगवतो सावक्तिसङ्घो संघं नमामि। तीन बार भंते जी को सम्मान प्रकट करते हैं। वंदामि भंते, वंदामि भंते, वंदामि भंते। Thank you. Thank you, sir. I have meanwhile checked up on the Vedic traditions, implications of Acharya and Upadhyaya. So in the Vedic tradition, Acharya is a person who does all the teaching, complete teaching of the students, and उनका open भी करते हैं. So he is the main authority, and Upadhyaya is one who earns his livelihood by teaching parts of the Vedas to the students. So Acharya is not earning livelihood. For Acharya, he is supported by the society. But for the Upadhyaya, he is like a teacher who is teaching people something. While Acharya is a higher designation. So that is the, according to Vedic scholars, I just checked up that is it. So there is a difference. And the person who grants Diksha doesn't have a separate nomenclature, or maybe there is, and we don't know because there are such diversity of traditions, isn't it? Acharya is supposed to one who does the Upnayan, and also in a way he does for the child. He converts him into a temporary, you can call it temporary ordination. Because the जो brahmachari होते हैं, they are like anagarika, you can say. So they go out asking for food. In the ancient tradition, all gurukuls depended on alms round of the students. ब्रह्मचारी लोग जाते थे और गांव से भोजन लेके आते थे, and then they all took together. So that was the tradition. Okay, sir. Thank you. Namaskar. Thank you. Thank you, sir. Thank you, everyone. Have a nice Thank day. you.